Okay. Find the fourth proportional of the following. इन जो चौथो नंबर चए तो मिसिंग है मालूम के चौथो नंबर छा आहे असां कहिड़ी ख़बर पहिरियों नंबर सवाल खां पुछूं था कहिड़ो आहे 2, 3 एंड 6 अच्छा जेकॾहिं हीउ पहिरियों आहे रेशो ऐं हीउ ॿियों आहे टियों आहे त चौथो एक्स हूंदो एक्स मीन्स अननोन असांखे न आहे ख़बर एक्स वाई बी सी जेको तव्हांजी दिलि चवे उहो रखो गर्लफ्रेंड जे नाले जो पहिरियों लेटर रखो डज़ंट मैटर ओके मीन product of mean and extreme mean are here 3 and 6 extreme are here these two so 2x 3k 6 are multiplied so 2x this could be as 18 x is equals to 18k तव्हां 2 सां divide कयो so x is nothing but it is 9 the fourth digit is here is 9 now I 9 I okay part number second में छा चले 11 by 24 with ratio 7 by 15 with is equal to 5 by 8 but the fourth number is missing that is x वो असां कहिड़ो आहे x आहे जेको असांखे मालूम आहे मालूम करिणो आहे ठीकु आहे प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम मीन असां वटि कहिड़ा आहिनि एक्सट्रीम पहिरियां 24 by into x which should be product of mean कहिड़ा आहिनि 5 by 8 आहे पहिरियों में मसलो छॾायो ओके 11 by 24 x is equals to 5 टेबल here thrice time कम करे पियो 7 1 जा 7 ऐं 8 3 जा 24 हेॾा डिवाइड कनि था if we put 24 on the next side 7 by 24 they would be multiplying so 24 में cancel so 11x is equal to 7 अच्छा 11 मल्टीप्लाई में आहे असां इनखे जेकॾहिं परी साइड खणी ईंदासीं त वुड बी डिवाइडिंग सो x इज़ इक्वल टू 7 खे 11 छा कंदो डिवाइड कंदो द वैल्यू ऑफ x हियर मीन्स फोर्थ डिजिट इज़ हियर एज 7 by 11 कहाणी पूरी सम्झ में अचे थो न मीन एक्सट्रीम जी शयूं यादि जंहिंखां फॉर फाइंडिंग एनी वैल्यू ऑफ अननोन ओके थर्ड नंबर 16, 12 and another is 8 okay form them in the ratio 16 ratio 20 12 is 8 oh sorry 8 ratio with x mean product of mean product of extreme mean is 16 extreme 16 into x and mean is 12 into 8 16 is multiplying here so do not multiply them just they would be cancelled by division 8 your table twice time 2 your table 6 time so it means x is nothing but 6 so its fourth proportional is 6 okay your say question number 3 hoyo now 4 and further okay असां हाणे कंदासीं fourth number and further now fourth number 76 comma 28 into 57 76 ratio of 28 is equal to 57 ratio of x okay product of extreme that is 76 into x product of mean 28 into 57 इनमें तो इलाही शयूं थियूं रेशो में प्रोडक्ट ऑफ मीन एक्सट्रीम इवन दो कंटिन्यू प्रोपोर्शनल ऐं ॿिया बि इलाही सारा क़िस्म आहिनि प्रोपोर्शन जा पर असां प्रोडक्ट ऑफ मीन एक्सट्रीम की तरफ़ ते आहियूं हाल फ़िलहाल ओके 76 हियर इज़ मल्टीप्लाइंग परी तरफ़ ॾे असां वटि छा कंदो इट वुड बी डिवाइडिंग 76 ओके कैलकुलेटर जी थोड़ी हेल्प खपे पई छो जो थोड़ो रुखा सवाल अची विया 76 के 28 डिवाइड कंदो न कंदो बराबर करे था 28 multiplied by 57 that result is 15 96 divided by 76 it should divide it by 76 let's see oh yes this is dividing that is 21 its fourth proportional is nothing but it is fourth proportional is 21 okay
Question number 5. It is 36, 45 and 4. Okay. 36 ratio with 45 is 4th digit is x, unknown means x. Product of extreme and mean. So extremes are 36 and x, mean are 45 and 4. 36 is multiplying, so on the next side it would be obviously dividing. Okay, 36. Ninth table is working here. How much time? 5 times. 9 5s are 45 and 4 times here. 4 4s are cancelled here. It means only 5 remains. 5 is the value of x here. Okay, 5 is the value of x here. अच्छा, यार खत्म. इस फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 5 यार. तेन इंतजार है शल्पा शेट्टी को इंतजार है ना क्यों. अच्छा, ही आए 40, 30 is equal to 24 ratio of x. We don't know ratio. Okay, ratio 0 0 में cancel थी. This means 43 43 and 24 ratio of x. Product of mean and extreme. Extreme are 4x, mean are 3 and 24. अच्छा, 4 is multiplying here. On the next side it would be obviously dividing. 4 table 24 ते घणा चक्कर विंदो. 6 times 3 into 6, x is equals to 18. कहानी पूरी थी. This is nothing but question number 6 of 4th. Okay. असीं सवाल कंदासीं mean proportion. अच्छा, ये mean proportion कहिड़ी भला आहे? मीन जेको थींदो आहे न पुट, मीन इन बिटवीन 2 नंबर्स थींदो आहे. मिसाल तौर A, B ऐं C जेको आहे, इन में अगरि कोई असां पुछे व्हाट इज़ B, B इज़ मीन बिटवीन. इहो B मीन थींदो आहे बिटवीन कंहिंजे विच में, A एंड C जे विच में. दिस इज़ व्हाट मीन. अच्छा, हाणे जेकॾहिं मिसाल तौर असीं पहिरें सवाल खे ॾिसूं था पिया, त पहिरियों सवाल आहे 15 एंड 60 जे विच में असांखे मीन ॾिसणो आहे. हाणे हिन ॿिन्ही नंबरनि जे विच में मीन जे लाइ असीं मैंशन कंदासीं देयर इज़ अ एक्स. सपोज देयर इज़ अ एक्स. अच्छा, हिननि ॿिन्ही जे विच में कहिड़ो आहे? एक्स आहे. उनखे असां ॻोल्हणो आहे. प्रोपोर्शन में जीअं तव्हां ॼाणियो था 4 डिजिट थींदा आहिनि, पर असां वटि हिकिड़ो 1 डिजिट आहे और 3 डिजिट आहिनि. त हाणे चौथे डिजिट लाइ असां सेंट्रल नंबर खे ई रिपीट कंदा आहियूं. व्हेन वी राइट देम इन अ रेशो देन वी शुड रिपीट द सेंट्रल नंबर. सो ईअं असीं सेंट्रल खे रिपीट कंदासीं. एंड वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ मीन दैट इज़ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दैट इज़ 60. अच्छा, हाणे स्क्वायर ख़त्म करण जे लाइ वी जस्ट गो बाय स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. तो स्क्वायर रूट ॾींदासीं 15 एंड मल्टीप्लाई बाय 60 जे विच में. अच्छा, जेकॾहिं असीं 15 खे मल्टीप्लाई करे वठूं 60 सां त आंसर थी थो 900. ऐं 900 जो स्क्वायर रूट जेको आहे उहो घणो निकिरंदो आहे? 30. नाउ 30 इज़ मीन बिटवीन दीज 2 नंबर्स. 15 एंड 60 जे विच में जेको मीन आहे उहो 30 थींदो. ठीकु आहे. इहो असांजो सवाल नंबर काऊं हुयो? पहिरियों सवाल आहे. कम टू द सेकंड नंबर क्वेश्चन. सेकंड नंबर में चवे थो पियो त असांखे 18 एंड 32 जे विच में मीन ॻोल्हे ॾियो. हाणे 18 ऐं 32 जे विच में मीन कीअं ॻोल्हे ॾींदासीं? चवंदासीं बाबा 18 ऐं 32 जे विच में सपोज कयो देयर इज़ एक्स एंड वी रिटन एज इट. अच्छा, असां विची नंबर खे रिपीट कंदासीं. 18 रेशो ऑफ एक्स is equals to x ratio of 32. Similarly, product of mean that is x into x and 18 into 32. x ke x sa kado x square, and similarly when you multiply 32 this one. Acha, 32 ke tama multiply kado 18 sa multiply by 32, that is 576. It means that is 576. Acha, स्क्वायर ख़त्म करण जे लाइ वी टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड.
ॿिनी तरफ़नि ॾांहुं असीं स्क्वायर रूट खणंदासीं. So this becomes as x square and its square root, that is 576 and its square root. Right now, square root of 576 is 24. It means x is nothing but it is 24, and 24 is a mean between 18 and 32 respectively. Question number 3. हाँ असीं थर्ड नंबर क्वेश्चन के ॾिसूं. थर्ड नंबर में चवे छा थो, थर्ड नंबर में चए थो 28 एंड 63 जे विच में असांखे ॻोल्हियो. अच्छा, वी वुड से दैट इज रेशो कामा x एंड कामा 63. देयर इज अ मीन बिटवीन 28 एंड 63, दैट इज x. ओके. अच्छा, according to ratio we repeat the central number, that is a proportion के मुताबिक सां असां central के repeat कंदासीं. Product of mean x into x is equals to 28 multiplied by 63. X into x, that is x square, and we would be just multiplying this one as 63 multiplied by 28, that is 1764. 1764. Right now, again we will say that is square a root on both sides. On both sides, that is nothing but as x square and its root, that is 1764 and its square root. X is equals to square root in cancel thing. No. Right now, square root of 1764, that is 42. So the number is 42 in between these two numbers. Hope so तव्हांखे इहा ॻाल्हि सम्झ में आई आहे. अच्छा, इन खां पोइ असां वटि जेको क्वेश्चन आहे थर्ड. अच्छा, असां थर्ड नंबर कयोसीं. हाणे असां इन खां पोइ जेको क्वेश्चन कंदासीं, दैट इज़ फोर्थ नंबर. व्हाट इज़ 4? सी द क्वेश्चन. फोर्थ नंबर में छा थो चवे? फोर्थ नंबर में बि साॻी कहाणियूं आहिनि. Number are 27 and what is number? Another is a 12. Okay. Now 27 comma x comma 12. So which can we repeat kanda आहियूं? That is repeated x and that is again x, that is a 12. Product of mean x into x and external numbers, that are 27 and 12. Okay, multiply. 27 multiplied by 12. Right now, x into x, x square. When we just multiply 27 by 12, that is 324. 324. Now, square khatam karne ke liye we just say square root. Kehdi taraf da? On both sides. It means x square and square root and 324 जो भी square root. x जो त असां वटि x थींदो, बाक़ी 324 जो असीं मालूम करे वठंदासीं. स्क्वायर 324, that is 18. It means 18 is a number that is between 27 and 12 के विच में मीन आहे. ओके. क्वेश्चन नंबर 5. 5 नंबर क्वेश्चन में बि साॻी कहाणी आहे. चए थो पियो 40 एंड 90 जे विच में तव्हां मीन ॻोल्हियो. ओके, डज़न्ट मैटर. असां चवंदासीं भाई इन्हनि जे विच में जेको नंबर आहे मीन लेट दैट इज़ एक्स. ओके. नाउ रेशो में रखण लाइ रेशो ऑफ एक्स एंड इज इक्वल्स टू एक्स रेशो ऑफ 90. प्रोडक्ट ऑफ मीन दैट इज एक्स इंटू एक्स एंड 40 इंटू 90, दैट इज व्हाट एक्स स्क्वायर. एंड when we multiply 40 into 90, now see 40 multiplied by 90, that is 3600. 3600. Now we will take as a square root on both sides. Root on both sides. So we will take a square root. X square, x root, and is equals to 600 and its square root. Now square and cancel thing, though x is equals to, that is a 6 in jo asa wata double 60, I think so 60. Now see square root of 3600, that is 60. Okay, इहो असांजो सवाल नंबर 5 हुयो.
सेम तरीके से असी क्वेश्चन नंबर 6 ते हलदासीं, दैट इज 44 and 99. The number are these two. Okay. Now 44 इन्हनि जे विच में सपोज कयो दैट इज x. Now 44 ratio of x and x ratio of 99. Now product of mean, that is x into x, 44 into 99. So x into x, that is x square, that is what, x square, and is equals to असी 44 के multiply करना 99 सां, that is 43 and 56. Now इनके खत्म करने के लिए we would say that is square root on both side. So this could be as x square and its square root, 4 3 5 6 and its square root. So हमारे सो इतने इंदो x is equals to असां square root वठदासीं as of 43 and 56. That is nothing but this is 66. These are your main proportional questions. Easy here. Okay. Next question.